Hello and welcome to all the viewers of Crypto TV. Today we are at the special segment of news, which is Weekly Wrap. This is Parvati Nirvan welcoming you all. And I am Manoj Dara, and Parvati, let's get started with the top news for today. Definitely. Cryptocurrencies started the week on a despondent note after US inflation climbed to a fresh 4-decade high, raising doubts about policy measures, questioning Federal Reserve's policy past initiative to control rising prices. Bitcoin traded about $26,000 on Monday. The fortunes, however, took a dip after crypto lender Celsius froze customers' withdrawals amid extreme market conditions. Bitcoin plunged to nearly $20,000 in intraday trades, its lowest level since December 2020. However, digital assets rebounded after the Fed hiked its key interest rates by 75 points, the largest interest rate increase since 1994, and signaled it would continue lifting rates this year at the most rapid pace in decades as it races to slow the economy and combat inflation that is running at a 40-year high. So what I understand is there is a lot of activities that happened from Monday to Saturday. Today we are at Saturday, and the Bitcoin from 26,000 to 20,000 and nearly 20,000 it is reaching, and I think we are going to see that, right? Actually, yes, Parvati, you are absolutely right. Since you have given a very nice gist of what has happened in this week, but let me tell you, there are three factors that are bothering the market. One is, of course, is the rising inflation. Russia and Ukraine war has given actually has taken the entire globe on the back foot as far as economic activity is concerned. Inflation is rising towards the north, and as we speak that interest rates are also rising, and you have also mentioned about Fed has increased by 75 bips. Cryptocurrency market rebounded a bit on this, but as you know, there is actually a concern whenever the market goes up, उसमें एक broader selling देखने को मिली थी हमने. तो जैसे Thursday के जिसमें जैसे हमने मार्केट में थोड़ा सा एक rise देखा और वहाँ पे लेकर we saw exaggerated selling, and hence it slipped below 21,000 as well. So actually this is on rising inflation. इंटरेस्ट रेट को एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो बना हुआ है यूएस में, और देयर इज अ बिग कोरिलेशन बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड द क्रिप्टो करेंसी मार्केट. क्लोज टू 0.8 के लेवल्स पर वो एक ट्रेड करता है. इसी के लिए जो यूएस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन आता है, बिकॉज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो जहाँ से फंड्स लेके आते हैं, वो कैपिटल जो जहाँ से इन्फ्यूज होता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, वो is sensitive to all the information or macroeconomic activity happening in US. So moving on. So this week's sharp and sudden crash in cryptocurrencies caught crypto lender and crypto hedge funds on the wrong foot, who remained sanguine and failed to follow appropriate risk management practices. Crypto lending platform, the Celsius network, announced that it was pausing all withdrawals and transfers between accounts owing to extreme market conditions. Celsius has not given a date for when the customers would be able to withdraw again, instead warning customers that this process will take time and there may be delays. Celsius Network LLC has hired restructuring attorneys for the law firm Acute Strauss Higher Enfield LLP to advise on possible solutions for its mounting financial problems. So Celsius has also appointed banking giant Citigroup to advise on possible solutions after the troubled crypto lender paused customer withdrawals due to the significant market volatility. There is one more news which is bothering the market, is Dubai-based crypto fund 3 Arrow Capital became another victim of the cryptocurrency round. 3AC is facing possible insolvency after incurring at least $400 million in liquidation. सो ये एक बहुत ही एक बहुत बड़ा फेज है जिसे मैं एक मार्केट में जो इवेंट्स हुए हैं उससे रिलेट करना चाहूँगा. जैसे टेरा लूना इज कंसिडर्ड टू बी द राइज ऑफ बेयर मार्केट की जो शुरुआत हुई थी हमारे क्रिप्टो करेंसी में. टेरा लूना का एपिसोड तो हम सबको पता ही है, लेकिन दिस सेल्सियस का थिंग इज कंसिडर्ड टू बी द लेमन ब्रदर क्राइसिस के भी हम उससे कंपेयर कर सकते हैं. तो क्या ऑफ द क्रिप्टो करेंसी जो अपना मार्केट है उसमें जो एक इवेंट है उस पर आप कंपेयर कर सकते हैं उसको इजीली. टेरा लूना के जो एंटायर यूनिवर्स है उसमें सेल्सियस का भी एक्सपोजर है और उसमें 3 Arrow का भी एक्सपोजर है. तो उसमें हुआ क्या है, नंबर 3 सीक्वेंस में आ रहे हैं, पहले टेरा लूना, फिर नंबर 2 पे सेल्सियस और नंबर 3 पे देन दिस थिंग. आप सीक्वेंस देखिए और इनफैक्ट
व्हाट हैपेंड इज उनको तो बहुत बड़ा झटका लगा ही था कि जब ये टेरा लूना का एक कोलैप्स हुआ था, उन्होंने उनका जो एक्सपोजर था वहां पर तो उन्होंने लॉसेस सफर किए ही है। बट अभी क्या हुआ है, व्हाट इज सेल्सियस? सेल्सियस इज जब भी हम रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं तो इट सेज दैट द कंट्रोवर्शियल क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस हु ऑफर्स हायर देन मार्केट इंटरेस्ट रेट। सो ये क्या करता है कि ये बैंक के जैसा बिहेव, आई मीन ऑल दोस एक्टिविटीज विच ए बैंक जो एक बैंक करता है वैसा ही सेम टू सेम ये सेल्सियस भी कर रहा है। और इनफैक्ट वो एक 17 to 18% जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑफर भी करता है। से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव योर ओन क्रिप्टो एसेट्स, आप सेल्सियस के पास में जाते हैं तो आपको उनके पोजीशन में लेते हैं और आपको वो लोन भी देते हैं। सो दैट इज समथिंग विच दे ऑफर। अगर आप, एंड वन मोर थिंग, आप आपका घर भी मॉर्गेज रख के लोन उठा सकते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग, और एक बहुत बड़ा कंसर्न मार्केट में हुआ है बिकॉज रिडम्पशन प्रेशर्स हुए हैं, मार्जिन कॉल आए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया है। तो फ्रीज करने के वजह से देयर इज रिपल इफेक्ट, एक चेन इंपैक्ट होता है। 3 एरो का भी एक एक्सपोजर था, तो वहां पर भी एक मार्जिन सिचुएशन जैसा बना हुआ है। ऑल दिस थिंग इज लिंक्ड एंड इट इज लिंक्ड टू द फॉलिंग मार्केट। दैट्स इट। Right. Moving on to next. So Bitcoin's slide tracks balance sheets of several prominent holders such as El Salvador, MicroStrategy, Tesla, and Jack Dorsey. They saw losses on their Bitcoin holdings piling higher following crypto market turmoil this week. This happens in falling market quite often, right? Exactly. So what happened? These जो ये बड़े-बड़े players हैं सारे, वो उनके पास Bitcoin holdings भी बहुत large numbers में हैं और उन्होंने various price cost पे खरीदी है, लेकिन अभी already वो 50% मार्क पे पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या Bitcoin और नीचे जाएगा, कितना नीचे जाएगा, और इन सारी चीज़ों पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। हम हमारे व्यूअर्स को एक नंबर्स की तरफ हम लेके चलते हैं। सो आपने एल सल्वाडोर बताया। एल सल्वाडोर का लगभग दे आर होल्डिंग अराउंड 2300 और बिटकॉइंस, विच इज एवरेज प्राइस इज रफली अराउंड $45,000। तो अभी हम बिटकॉइन की प्राइस देखें तो कुछ 21,500 के करीब चल रहा है। अगर हम माइक्रो स्ट्रेटेजी की हम बात करें, माइकल सेलर की 1,29,000 बिटकॉइन है उनके पास में, जो उनका एवरेज प्राइस लगभग 32,000 के करीब है। राइट। और अगर हम एलॉन मस्क की अगर हम बात करें, टेस्ला की, तो उनके पास से 42,000 बिटकॉइंस है, विच इज समवेयर अराउंड 31,640 ऑड लेवल्स पर उन्होंने एक्यूमुलेट किए हुए हैं। और चौथा, और जो जैक डॉर्सी है जिनका ट्वीट बहुत बड़ा फेमस हुआ था, तो उन्होंने लगभग 8,000 के करीब कुछ तो बिटकॉइंस है, और उनका जो बाइंग प्राइस है सबसे लोवेस्ट है, दैट इज 27,000। बट इम्पैक्ट हुआ है एल सल्वाडोर से लेकर जैक डॉर्सी तक तो हुआ ही है। और इनफैक्ट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज बिटकॉइन पर एक बहुत बड़ा एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट का एक बहुत बड़ा वेटेज भी है, और डोमिनेंस फैक्टर ऐसा है कि यहाँ पर जो माइनर्स हैं वो बहुत सारी अपना जो बिटकॉइंस है वो बेच रहे हैं बिकॉज ऑफ द ब्रॉडर कंसर्न्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे हमने बताया हमारी पहली न्यूज में। Right, definitely. Let's move to next. Moving on, MicroStrategy Inc. CEO Michael Saylor has urged investors not to worry about a potential margin call on a Bitcoin-backed loan, claiming that the company has plenty of collateral to pledge if one is required. Saylor further said that there won't be margin calls on long as Silvergate loan is collateralized with an LTV of less than 50%. In May, the software company claimed that the price of Bitcoin could have to fall by $21,000 before a call on its $205 million loan from a Silvergate bank unit would be triggered, but that it might contribute more to the collateral package, so it never gets there. तो आप इसको एक्सप्लेन करें, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि माइकल सेलर इतने कॉन्फिडेंट क्यों नज़र आ रहे हैं इस फेज में भी, जबकि हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं, प्राइजेस देख रहे हैं, बहुत कुछ अभी इट्स नॉट अ ग्रेट सिनेरियो करंटली। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एक्चुअली माइकल सेलर कॉन्फिडेंट थे जब भी हम उनको मिले थे वहाँ पे, और ये टाइम पर तो वो सिर्फ अपना जो पक्ष जो उनका जो स्टैंड है उसको बचाने के चक्कर में। अच्छा। क्योंकि अभी फॉलिंग मार्केट में तो सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि उनको सिर्फ ये दिलासा देनी है उनके इन्वेस्टर्स को कि उनका जो डिसीजन है वो कितना सही है। तो उन्होंने क्या आउटलुक है, दैट इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एनालिस्ट का ये मानना है कि यहाँ पर जैसे हम मार्जिन कॉल बोलते हैं, तो ये क्या होता है, इट हैपेंस इन एनी मार्केट। जैसे क्रिप्टो करेंसी मार्केट या फिर फॉर दैट मैटर एनी मार्केट फॉल्स, मार्जिन कॉल्स बड़े बड़े ट्रिगर होते हैं। मार्जिन कॉल तभी होता है जब भी आप आपका बिटकॉइन प्लेज कर आप उसमें लोन उठाते हैं टू परफॉर्म सम ऑफ द अदर एक्टिविटी। इसमें उन्होंने बिटकॉइन
प्लेज कर लोन लिया और उसमें से बिटकॉइन खरीदे. दैट इज समथिंग व्हिच ही हैज बीन डूइंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम. बट इन्होंने मई में इंडिकेट भी किया था माइकल सेलर ने कि $21,000 के लेवल पर उनका एक मार्जिन कॉल ट्रिगर होगा $205 million का. That's what actually the big concern was. It is considered to be an event जहां पर एक बहुत ज्यादा पैनी नजर रखनी पड़ रही थी इन्वेस्टर्स को, क्योंकि एक अगर 21,000 आया, अगर वो नहीं कवर कर पाए उनका जो मार्जिन कॉल है, तो वहां पे सेलिंग आती है यूजुअली. दिस हैपेंस. लेकिन वो हुआ नहीं. बाहर के एनालिस्ट जो हैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है एज फार एज माइक्रो स्ट्रेटजी इज कंसर्न. उनका जो एनालिसिस है वो ये बोलता है कि लगभग 95,000 और बिटकॉइंस उनके पास में और पड़ी है प्लेज करने के लिए. एंड ही इज प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट ही विल सी दिस सिचुएशन थ्रू. मूविंग ऑन. Heavy cryptocurrency sell-off in the market has increased liquidity crunch for projects and entities alike, with utilization levels plummeting. On popular decentralized finance lending protocol Aave, utilization rates have fallen across nearly all stablecoin borrowings. Data indicates that Aave's TVL has fallen by 55% to a meager $8 billion from $33.51 billion. Currently, there is $115.7 billion worth of funds remaining compared to $303.9 billion in peak TVL witnessed in November 2021. Most of the balance funds, or $72 billion of TVL, are located on ETH blockchain. So what is happening is there is definitely market crunch, liquidity is happening, and there's a lot of sell-off is happening because they want to actually liquidify, right? That is the whole problem. And then the TVL which has gone down from November to, and this is the sequence, like we've just discussed everything and we've discussed all the reasons. Yeah, so this is what is the impact that is now coming forward, and True. it is. So let's move to the next news. Absolutely. Cryptocurrency exchanges Binance and Kraken, along with layer 2 sidechain Polygon, are among 3 companies looking to add staff amid crashing crypto markets. Binance is looking to fill over 2,000 open positions across Europe, Asia, South America, Africa, and Middle East. CEO Jiangping Zhao thinks it's the best time to gain access to some of the industry's best talent. Rival exchange Kraken also disclosed its intention to increase the headcount with over 500 staff. Meanwhile, Polygon has filled at least 50 senior positions. Recently, Crypto.com announced job cuts amounting to nearly 5% of its workforce. And BlockFi said it plans to lay off around 20% of its staff. Crypto exchanges Coinbase Global Inc. said it will lay off 12 employees in India as part of the broader plan to shed 18% of its workforce globally. So whenever such event happens in the market, such as Celsius ने account froze कर दिए. There can be a possibility जहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर job cuts हुए थे. देयर कैन बी एन एक्सपोजर वहाँ पर जो उन्होंने सेल्सियस से के साथ में कुछ एक्टिविटी की होगी, और बिकॉज ऑफ दिस फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स दे कुडंट पे सैलरी टू ऑल दिस इंडिविजुअल. दैट्स व्हाट मार्केट एनालिस्ट आर सेइंग. सो दैट इज समथिंग विच इज एक्चुअली अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इंटायर क्रिप्टोकरेंसी मार्केट. बट Binance ने एक स्टेप फॉरवर्ड आगे आए हैं, और वहाँ पर उन्हें पता है कि जैसे उनकी जो CEO है जिंगपिंग जाओ बहुत ही डायनामिक इंडिविजुअल है. उनको मालूम है कि जब भी ये क्रिप्टोकरेंसी मार्केट नीचे आता है, फॉर दैट मैटर एनी मार्केट्स कम डाउन, ये लेऑफ्स होते हैं, और बेस्ट टू बेस्ट टैलेंट्स उनको वो एक्चुअल टाइम होता है उनके साथ में इंटरैक्ट करने का और उनको अपनी कंपनी में ऑनबोर्ड करने का. मूविंग ऑन. US stock market regulator, the Securities and Exchange Commission, has sent notice to leading crypto exchanges following the recent market crash. The regulator wants to know the anti-insider trading measures these exchanges are implementing. The SEC's actions are likely to be linked with the several cases of insider trading popping up in the crypto market recently. The move follows the ongoing crypto market crash, which has given off over $1 billion worth of crypto wealth of investors. SEC Chief Gary Gensler had earlier accused exchanges of trading against individual traders. Meanwhile, Binance.US, the sister company of global cryptocurrency exchange Binance, is facing a class action lawsuit from investors for the sale of Luna and Terra USD. A group of investors filed a class action lawsuit in the Northern District of California on Monday, alleging that Binance sold unregistered securities in the form of Luna and USD to investors and misled them into buying them.
So the action that has been taken from the SEC, that they are sending these notices to crypto exchanges, what are they trying to achieve? Do you think that they are trying to regulate or control in some manner? So actually, regulation and control, that's what the SEC's activities are, of course, when they intend to do something. But जो Binance, जो BNB जो हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने अपनी न्यूज़ अभी पढ़ी, हाँ, जो क्लास एक्शन लॉ सूट, वो एक बहुत बड़ा एक इवेंट है जो पूरा का पूरा जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो ट्रैक कर रहा है। सबसे बड़े एक्सचेंज है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी होता है उनके यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी डायनामिक भी हैं। जब भी मार्केट नीचे गिर रहा था, एक BNB एक ऐसा अल्ट कॉइन था जो इतना ज़्यादा नहीं गिरा था, बिकॉज यहाँ पर उनका पूरे ग्लोब में एक्सपेंशन करने का जो प्लान है, जर्मनी, UK एंड यू नेम इट, दुबई, अबू धाबी, दे वांट टू गो एंड एक्सपांड देयर ऑपरेशंस। दैट वाज एन ऑप्टिमिज्म। लेकिन ये जो केस है, अगर ये प्रूव होता है कि यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो उसका implications जो है वो काफी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। All right, moving on. Fabio Panetta, an European Central Bank Executive Board member, has expressed optimism that a central bank digital currency, that is CBDC, will be ready for launching within 4 years. Panetta told the committee that if a digital euro is created, it will be limited to only 1.5 trillion euros. A concern with CBDCs is that consumers might keep all their money in the digital format, in fact, depositing their entire savings with the central bank and starving consumer banks of the funds they require to lend to individuals and businesses. In a statement, Panetta said that keeping total digital euro assets between 1 trillion and 1.5 trillion euros would avoid negative effects for the financial system and a monetary policy. तो ये जो है स्ट्रेटजी उनका, वो उनके यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही है, उसको उन्होंने ध्यान में रखकर किया हुआ है, और उनकी सोच है। और इनफैक्ट ये CBDC पर एक सबसे पहला मूव है, और ये देखना पड़ेगा कि इंडिया भी एक CBDC की तरफ कुछ काम कर रही है, इफ दे कैन टेक क्यूज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पर वो होलसेल CBDC की तरफ हम लोग प्लान कर रहे हैं। ठीक है। Elon Musk, SpaceX and Tesla were sued for $258 billion in federal court on Thursday by a DogeCoin investor who claimed to be that Musk directly manipulated the price of DogeCoin in a deliberate crypto pyramid scheme. Conducted over Twitter, a US resident, Kenneth Johnson, has alleged that Musk drove up the price of DogeCoin with his tweets about it, but that the currency lacks underlying value and Musk promoted it for its own profit exposure and amusement. Johnson is also seeking court orders to prohibit Musk from promoting DogeCoin and to declare DogeCoin trading a form of gambling under federal and New York law. Meanwhile, Elon Musk spoke to employees of the social media platform in a virtual meeting on June 16th. His first Twitter all-hands meeting, Musk discussed his plans for the company, including the integration of digital payments and the elimination of cryptocurrency-related scams. सो इलॉन मस्क और ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, तो कभी वो दूर नहीं हो सकते। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक प्लान्ड इवेंट है, क्योंकि ये सारे एक्टिविटी के बाद सडनली डोजकॉइन का जो प्राइस था वो अप हो गया। सो आई डोंट टेक दैट एज अ रियल इवेंट, एंड आई थिंक दिस इज माई पर्सपेक्टिव। आई थिंक दिस वाज आल्सो क्रिएटेड बाय एलॉन मस्क एज लाइक ही कम्स अप विद प्राइसेस अप हुआ था, लेकिन उसके बाद में जब भी सबको खबर समझ में आया कि खबर क्या है, उसके बाद भी नीचे भी आया फिर उसके बाद प्राइसेस। तो फिर से एलॉन मस्क कुछ नया लेकर आ जाएंगे। आई एम वेरी होपफुल, बट वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वो कितना अच्छी तरीके से बारीकी से केस को हैंडल करते हैं। ऑल राइट, दैट्स ऑल देयर इज इन टुडेज वीकली रैप। दिस इज मनोज धारा एंड दिस इज पार्वती निर्वाण साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। Don't forget to like, comment, share or subscribe Crypto TV on YouTube, Facebook or Instagram. And for now, just bye-bye. Take care. Thank you.